Hello everyone, welcome to one more lecture of English of Standard 9th. Today we are going to do 2.6 and this is a skit and the name of the skit is the past in the present. Now here with the heading you can identify that whatever is happening in the present is related to the past. So here are some characters which are given in your book. There is one boy, a young teenager boy. His name is Neil and his mother is there. Then they are the main characters of this skit and they are having the conversation, and in that conversation they go into the past. The mother she goes into the past and she explains her boy that what are the good moral values that his grandfather, forefather, ancestor had in their own days. Okay, so here in this lesson you are going to learn how to be very particular about your things, how to do your work, and the work you can be learning these few moral values in day-to-day life. So this is all about in this skit. So we'll start the skit. Then first is the scene 1, a typical teenage boy's room in a messed up state. Now here is a teenage boy मतलब teen वाली जो एज रहती है 13 से लेके 19 तक जो एज रहती है उसको टीनेज बोलते हैं. सो यू आर ऑल्सो अ टीनेजर. सो हाउ यू आर एट होम, योर होम इज क्वाइट मेस्ड अप आई थिंक सो बिकॉज यू आर ऑल्सो अ टीनेजर. बुक्स यहाँ रहती है, सॉक्स कहीं और, बैग कहीं और, शर्ट कहीं और, टाई कहीं और. सो दिस इज ऑल मेस्ड अप इन योर रूम. सो सेम वे नील इज जस्ट लाइक यू, अ मेस्ड अप बॉय एंड हिज रूम इज ऑल्सो वेरी मेस्ड अप. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर, नील ही इज सेइंग टू हिज mom now. Neil, Mom, I put the dishes in the dishwasher and just as you asked me, now I'm going out to meet my friend. Now he's saying to his mom that, Mom, I have put the dishes in the dishwasher and as you have told me, his mother might have given some work to all the family members that you will do this work, you will do that work. So Neil's mother might have given Neil some work and that work is to put the dishes into the dishwasher. So he is saying to his mom that I have put the dishes into the dishwasher, now I am going out to meet my friend. Now the mom enters in a mode outfit. Mode outfit means in modern outfit because this mom and Neil is belonging to modern generation of today's generation. They are belonging to today's generation. So the mom is wearing a modern outfit like today's ladies, they wear the modern outfit. Same way she is wearing the modern outfit. So now mom is saying you haven't cleaned up your room. Now mom is saying to Neil that you have not cleaned up your room. Your room is still messed up. Okay. Then Neil is saying, oh, I cleaned it only 2 days ago. Now Neil is saying that कि मैंने तो ये 2 दिन पहले ही clean किया था, अभी वापस मैं क्यों clean करूँ? Just like I hope you also say this to your mother that I have done this 2 days before. Why should I do again? I hope you are doing same way at home. Then the mother is saying that you have to clean it up every day. So mother explains her that you have to clean your room every day because every day we create a new mess. So every day we have to clean our room. Okay. So now Neil picking up his books, clothes, headphones, etc. from the floor and bed and putting them in their places. Now what Neil does, the action, he is picking up his books, whatever was scattered over there on the floor, he picks up everything, his books, his clothes, his headphones, etc. from the floor and then he puts it into the correct their places from where they belong to. He put that all those things into the correct places. Is it necessary to clean up every day? What difference does it make? Now Neil is asking question to his mother that is it necessary to clean the room every day? रूम को रोज क्लीन करना ज़रूरी है क्या? क्योंकि रोज क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोज़ हम लोग मेस करते तो रोज़ क्लीन करना ज़रूरी है क्या? रोज़ ही मेस होता है तो वापस क्यों क्लीन करने का जब मेस होना ही है रूम को? तो इस क्या फ़र्क बनता है, चाहे क्लीन करो या ना करो वो तो मेस होगा ही. So this way he is asking questions to his mother. The mother says it does. It builds up the right habit, the right attitude. Now the mother she says to Neil that yes, it makes a lot of difference. Creates the right attitude towards in us and it creates the good habit with us that we are very particular with our things. We keep our things organized. We are not messed up with all our things. Okay, we keep all the particular things at their own particular places. Okay, so books will be in their bookshelf.
then pillows will be on properly arranged on the bed, headphones will be in proper their covers. Okay, so this way she is explaining to her son that yes, this makes different, cleaning our room makes a lot of difference because we are keeping our room organized. हमको हमारा रूम ऑर्गेनाइज रखना चाहिए. कभी समझो लाइट चली गई तो यू आर नॉट एंड इट्स कम्प्लीटली डार्क इन योर रूम, सो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग इन दैट मेस्ड अप. ओके, if you are able to keep your things at a particular place, so लाइट जाएगी, अंधेरा रहेगा तो भी तुमको पता चलेगा कि हाँ मेरी चीज़ यहाँ है, so you can pick up very easily. So this is the right attitude you should have at your home to keep your things organized in their own places. Okay, so next, Neil, when the mother says, when this is the right attitude, then the Neil cuts his mother's dialogue. मम्मी उसकी बोलते जाती है अबाउट एटीट्यूड एंड ऑल, तो नील बीच में ही उसकी मम्मी के डायलॉग को कट करके कुछ बोलता है. नाउ ही सेज दैट ऑल राइट आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज ऑन. नाउ नील इज सेइंग दैट मुझे वैसे भी लेक्चर्स बहुत मिलते हैं स्कूल में. नाउ यू डोंट स्टार्ट गिविंग द लेक्चर ऑन दिस क्लीनलीनेस. ओके, सो दिस वे ही इज आंसरिंग टू हिज मदर. ओके, then mother is saying after Neil finishes his chores means household work, जो भी रहता है घर का काम, उसको chores बोलते हैं. So now when the Neil is done with the cleaning this household work, the mother, she says that's look much better now, but you forgot to make your bed. Do that and you may go out. Now Neil has picked up all those scattered things from the floor, but he forgot to make the bed. Now what is make the bed? Make the bed in English मतलब बेड को फर्नीचर से बनाना, काट के वगैरह नहीं. मेक बेड मतलब बेड को प्रॉपरली अरेंज करना, बेडशीट को उसके ऊपर लगाना, पिल्लो को सही से रखना, पिल्लो के कवर को सही से अरेंज करना. दिस इज कॉल्ड मेक बेड. ओके, मेक बेड मतलब वो कारपेंटर वाला मेक बेड नहीं. मेक बेड मतलब हमारा जो बेड रहता है उस पर प्रॉपरली बेडशीट्स को, पिल्लोज को वगैरह अरेंज करना. दैट इज कॉल्ड मेक बेड इन इंग्लिश. ओके, so now she is saying that you have done everything, you have put everything in the proper order, but you have forgot to make your bed. So you can do that and then you can go out to play. Then Neil irritated. Now Neil gets irritated because he has done all those, picked up all those things and he kept in the proper order. Now mother is saying something extra to make the bed. Now he is getting irritated. I hope you also get irritated when your mother constantly keeps you telling something to do this, to that. So same way he is getting irritated and he says, Mom, it's getting late. The bed is going to be messed up again when I sleep after lunch. Why do I have to make my bed? Why? Now he is saying in a very irritated manner. बहुत एकदम irritated, एकदम frustrated होके बोलता है, Mom, I'm getting late. I have to go out and meet my friends on time. अभी बेड ठीक करके फ़ायदा क्या है? मैं दोपहर में लंच के बाद तो मैं सोने ही वाला हूँ, वापस वो बेड मेस्ड अप होगा. सो व्हाट इज़ अ नीड टू make the bed clean right now? Again it's going to be messed up, so why I should do right now? So this way he is asking and he is somewhat irritating and giving answers to his mother. Okay, then Mom, that's remind me of something I heard about your grandpa. And then now mother is saying that the way the Neil was answering, the mother was recollecting something. Now she says that this reminds me of something of your grandfather. Okay, then what she says, when he was in his teens, जब उस नील के grandfather जब teenage के थे, नील के जितने थे, he had many more daily chores to finish and much tougher ones. Okay, so she says that when your grandpa was of your age, of your teen age, he was having lot of tough work. Okay, बहुत सारे उनके पास और काम था, but he used to do his things very organized in a particular manner. Okay, then Mom continues. On that day his mom had told him firmly. Now she says that on that day, on one fine day, ग्रैंडपा की जो मम्मी थी उन्होंने ग्रैंडपा को भी कुछ ऐसे ही कुछ बोला था, फर्मली एकदम स्ट्रिक्ट होके कुछ बोला था. ना व्हाट इज दैट? A teenage boy from 1950s wearing loose trouser and shirt enters with his mother in a silk saree. Now this is going into the flashback. Okay, जब मम्मी इसको बोलती है नील को कि तुम्हारे ग्रैंडपा को भी उनकी मम्मी ने कुछ समझाया था. सो नाउ नील का और उसकी मम्मी का जो सीन है यहाँ पे फिनिश होता है. अभी नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है. अभी नेक्स्ट सीन में जो कैरेक्टर्स है उसमें है अ टीनेज बॉय फ्रॉम 1950s. ओके, सो वी आर इन 2020s. नाउ नील के ग्रैंडपा का जो टाइम था 1950s का, उसमें वैसे ही आउटफिट में, वैसी क्लोथिंग में, उस टाइम के जनरेशन की क्लोथिंग में एक बच्चा एंटर होता है विद द लूज ट्राउज़र. लूज ट्राउज़र मतलब लूज पैंट. ओके,
and shirt and enter with his mother, and the mother is wearing a silk sari. So this two mother and son belongs to 1950s, पुराने ज़माने के ड्रेसअप जैसे होके आए थे. Okay, now here their scene starts. Okay, the boy's mother, make your bed before going out. Now the mother, the next new mother is saying to that boy that make your bed and then you can go out. The 1950s boy, he is saying that, but mama, I have already watered the garden, brought home the groceries, dusted the living room, cleaned my bicycle. Now why do I need to make my bed? Now this boy of 1950s, that means he is Neil's grandfather. Now he is saying that मम्मी I have already watered the garden. मैंने झाड़ जो भी गार्डन में जो भी प्लांट्स थे उनको मैंने वाटर किया है. I have brought ग्रॉसरीज, मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी लेके आया है मार्केट से. देन डस्टेड द लिविंग रूम को भी मैंने डस्ट किया है, साफ़ किया है. देन क्लीन माई बाईसाइकिल, मैंने अपनी साइकिल को भी मैंने क्लीन किया है. ना अभी इतना सारा काम किया है मैंने. अभी वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेक द बेड, अभी मैं बेड क्यों करूँ, बेड को क्यों अच्छे से रखूँ. सो नाउ द मदर इज सेइंग टू दैट बॉय, दैट मीन्स द नील्स ग्रैंडफादर, जो छोटा बच्चा है उसको बोलते हैं, let me tell you about your grandfather in his teens. Now this mother is saying that to this boy that let me explain you about your grandfather. Okay, अभी नील के grandfather की बात हो रही है. Okay, so now this is again going into the flashback. Now here the flashbacks goes into Fildu. 1950s boys and mother visit and stand behind. Now the one which were there of second scene 1950s के जो मम्मी और बच्चा था, they recede back. मतलब या तो moving forward or else moving backward. When you are on a stage and you're performing something and you are done with your performance, then either you move back and you are about to do a performance, either you move front where the spotlight is there. So this is called recede. Now the 1950s character is over, so this mother and son, they recede back, and then 1910 का जो year था, उस ज़माने के मम्मी और बच्चा जो है वो आता है विद दैट एज, विद दैट जनरेशन ड्रेसअप. ओके, नाउ दिस 1910 बॉय एंटर्स ड्रेस इन अ कुर्ता पैजामा नाउ एंड कैप. नाउ इन दैट टाइम 1910 में जो कॉस्ट्यूम्स था जो लोग पहनते थे, बिकॉज ऑफ कुर्ता पैजामा एंड विद द कैप. गांधी जी जो नेहरू जो कैप पहनते थे, नेहरू जी वैसा वाला कैप पहन के एक बच्चा आता है. एंड हिज मदर इन अ 9-yard साड़ी, नोज रिंग एंड अ ज्वेलरी. एंड द मदर ऑफ दैट 1910 बॉय, उसकी मम्मी एक 9-yard साड़ी पहन के आती है. आई होप यू नो व्हाट इज़ 9-yard. इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ी. So the mother is wearing that 9-yard sari. We'll try to put the picture of that sari. So the mother is wearing the 9-yard sari. It's something like this. Okay, so it's something like this. I hope you can see or not, but it's something like this type of sari. Okay, so the mother of that time, she is wearing the 9-yard sari with the nose ring. At that time the people used to wear a big round nose ring and the jewelry, full jewelry of nice stones and gold. Okay, so the 1910 का जो ज़माना था उसमें boys का जो गेटअप था, it was kurta pajama with a Nehru cap, and the ladies used to wear 9-yard sari with the jewelry, round jewelry, nose ring, and the full jewelry of gold, or either it could be of stone. Okay, so now there is a scene between this 1910 generation mother and son. Now 1910 mother, she is saying to that son that you can't go out unless you make your bed. Now mother is saying to that boy that तुम जब तक अपना बेड ठीक से नहीं रखोगे तुम बाहर नहीं जा सकते. Okay, now 1910 boy, Mummy, I fetched water and filled up the pots, swept the terrace, collected wood for the stove, cleaned the grinding stones. Now here the boy is saying that कि मम्मी मैंने पानी को भरा है, लेके आया है. Now we have taps and pipes at our home. Okay, but during that time people were not having the taps and pipes facility. Okay, they used to go to towards the well, towards the pond, towards the sea to collect the water. So okay, so that is called fetch. Fetch मतलब कुछ चीज़ को वापस लेके आना घर पे. It is called घर पे या फिर कोई जगह पे, तो it is called fetch. Okay, so he is saying that I have fetch water. Fetch मतलब और भी एक होता है जैसे कि
गेम होता है जो कुत्ते लोग खेलते हैं, इसको जैसे बॉल फेंकेंगे और कुत्ता वापस लेके आता है वो बॉल को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेच. सो हियर फेच मीन्स टू ब्रिंग समथिंग. ओके, सो दिस बॉय इज सेइंग दैट कि मैंने आई हैव फेच्ड वाटर, मैंने पानी लेके आया हूँ, पता नहीं वो कहाँ से कुछ लाया रहेगा, वेल से या फिर सी से या पॉन्ड से, दैट इज नॉट मेंशन in your book. So he is saying that I have fetched water and filled all the pots. Now we have utensils in our home. We have drums, plastic drums भी होते हैं पानी को जमा करने के लिए. But during that time they were having pots. Okay, earthen pots they were having. So this boy has filled all those pots with those. With that water from where he has collected the water. Then he said that I have swept the terrace. घर के बाहर जो भी अंगन था पुराने ज़माने में, दैट इज़ कॉल्ड टेरेस. सो ही इज सेइंग दैट आई हैव स्वेप्ट दैट टेरेस, मैंने वो टेरेस को भी साफ किया है. देन कलेक्टेड वुड फॉर द स्टोव. नाउ वी हैव गैस. ओके, घर पे हमारे गैस का सिलेंडर आता है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम पीपल वेर नॉट हैविंग गैस, सो दे वेर कुकिंग ऑन द स्टोव. ओके, और जो स्टोव था उसके नीचे जो है हम लोग लकड़ी जला के खाना बनाते थे. और यू हैव सीन और नॉट, कुछ इस टाइप में रहता है एक सीमेंट का, और इसके नीचे लकड़ी रखते हैं एंड देन दे lit the fire and then they put the vessel over here. So this very type of stoves they were having during that time. So he is saying that I have collected wood for the stove, then I have cleaned the grinding stones. Now we have grinders, mixers वगैरह होते हैं कुछ चीज़ को ग्राइंड करने के लिए. But during that time in 1910 they were not having grinders because they were not having electricity at all. Grinders, mixers and everything works on electricity, yes or no? So during that time people were not having the proper electricity, so they were not also having that machine to grind anything. So they used to grind with handmade tools. Okay, घर पे अगर किसी दादी अगर नानी के यहाँ कहीं देखा होगा तो they were having different types of grinding tools. कुछ ऐसे भी tools होते हैं grinding tools, ऐसा कुछ होता है, इसको बोलते हैं pestle और mortar. ओके, इसके अंदर रखते हैं और इसको ऐसे ठोकते हैं तो उसके अंदर जो भी रहेगा वो पीसेस हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल एंड मॉर्टल. फिर एक ऐसे सील रहती है और उसको बड़ा सा एक जो है पत्थर का ये भी रहता है, तो इसको ऐसे घिस के भी लोग पीसेस करते थे पुराने ज़माने. तो these are the types of grinder during that time. Okay, this were the handmade grinders during that time. So he is saying that I have grinded the stones also. स्टोन्स मतलब कुछ ग्रेन्स का वगैरह होगा जो उसने कहा है कि मैंने वो स्टोन्स भी साफ किया है. ठीक है, नाउ नील द मॉडर्न बॉय ही इज कटिंग हिज मदर्स डायलॉग एंड ही इज आस्किंग नाउ नील इज आस्किंग टू हिज मदर दैट what are grinding stones? Yes, they didn't have any electric grinder in those days. Now Neil is saying to his mother that what are these grinding stones? Then he remembers that yes, in 1910 people were not having proper electricity. So from where they will bring the electric gadgets? Okay, so that's why they were having this type of handmade grinders. Okay, the mom of Neil, she is saying that no electricity either in most towns and cities in India then the mother says that in the most towns and cities of India that time there were no electricity. So here they have two dialogues and again they recede back. Okay, now next Neil looks surprised. Now Neil looks surprised. Why? Because all of this ओल्ड एज जो डायलॉग चल रहा है पुराने ज़माने का, दे आर हैविंग मोर टफ वर्क. ओके, जो भी उनका काम है वो सब हाथ से हो रहा है. नाउ डेज वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन मशीन, एडवांस टेक्नोलॉजी, बट ड्यूरिंग दैट टाइम दे वर हैविंग ऑल दोज हैंडमेड थिंग्स टू डू विद them. Okay, so Neil is now surprised to listen to this, that these people of this old generation people, they were doing their work with their hands, so not with the machine. So these are the more tough work to do. Okay, so here Neil is very surprised. Okay, now 1910 boy is saying to his mother that I promised to go to the river side with my friends. Why do I have to make my bed now? Now this 1910 boy is having his dialogue and he is saying to his mother that मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि मैं रिवर साइड जाऊँगा. Now why should I make the bed during this time? Okay, I have promised to meet my friend at this time, so I'm getting late. So this way he is answering to his mother. The boy's mother, he says to that boy of 1910, let me tell you about your great grandfather who lived in 19th century when he was young. Now this 1910 mother, he is saying to that boy that let me tell you about your grandfather. Okay, your great grandfather. Great grandfather मतलब
दादा के दादा. ओके, सो ही इज सेइंग दैट, शी इज सेइंग टू हिज सन दैट कि अभी मुझे तुम्हारे दादा के बारे में बताने दो कि उन्होंने अपनी यंग एज में क्या किया था. नाउ आई होप यू कैन इमेजिन कि अगर ये 1910 का जो काम है इतना मेहनत वाला है, तो जस्ट इमेजिन कि ग्रैंडफादर वाला जो काम रहेगा वो कितना टफ रहेगा, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रिसिटी नॉर एनी एडवांस टेक्नोलॉजी. ओके, सो व्हाट विल बी दैट वर्क ऑफ दिस ग्रेट ग्रैंडफादर. सो नाउ लेट्स सी हियर. 1910 boy and the mother received to where the previous pair stands. Now this 1910 boy and his mother, they step back to that previous pair. Okay, then 1810. Now here the great grandfather का जो generation का year है, it is 1810. Now here new boy of 1810 enters in dhoti, kurta and small turban with his mother in 9-yard sari and traditional jewelry. Now here the boy of 1810 he enters and his clothing is like dhoti. पुराने ज़माने में लोग धोती पहनते थे. Then they wear kurta on that dhoti and small turban. Turban मतलब एक राउंड सा ऐसा रहता है जिसे पंजाबी लोग पहनते हैं. That way they were having turban. So the boy is dressed up in this way and he enters this stage with his mother who is wearing 9-yard sari and traditional jewelry. Traditional jewelry देखा रहेगा बहुत ज़्यादा सब बड़ा बड़ा रहता है सब गोल्ड का, तो दैट इज़ ट्रेडिशनल ज्वेलरी. अगर नहीं देखा है तो मम्मी को पूछो, उनके पास भी होगी उनके ग्रेट ग्रैंड मदर की ज्वेलरी ट्रेडिशनल वाली. ओके, सो आस्क योर मदर इफ शी हैज़ देन शी कैन शो इट टू यू. देन द 1800 मदर जो है पुराने ज़माने की, शी इज सेइंग टू दैट बॉय दैट सन मेक एवरीवन्स बेड. नाउ द मदर इज सेइंग टू दैट बॉय दैट सन बेटा सबका बेड ठीक करो. ओके, then 1800 boy, now he is replying to his mother that mother dear, I have washed clothes at the river and put them up to dry. I have also chopped the wood, fixed the broken fence, took the goats up to hill to graze. I want to play atta with my friends. Why do I have to make the beds? Now he is doing so much of work. Now he is saying to that mother with the respect that mother dear, मेरी प्यारी माँ, मैंने कपड़े धोया है रिवर के साइड में, फिर उसको सुखाया भी है, फिर मैंने वुड्स को भी चॉप किया है, फिर उसको जो ब्रोकन फेंस है, फेंस मतलब व्हेन यू पुट अ बाउंड्रीज अराउंड समथिंग दैट इज कॉल्ड फेंस. सो ही इज सेइंग दैट मैंने फेंस को भी बाउंड्री किया है अच्छे से, कोई जगह को भी अच्छे से फेंस किया है, बॉर्डर किया है मैंने. देन जो गोट्स है, पहले जो लोग थे दे यूज टू रेयर कैटल्स, गोट्स, शिप्स. ओके, सो ही इज सेइंग दैट मैंने गोट्स को भी हिल के पास लेके जाके ग्रेजिंग किया है. नाउ गोट्स, कैटल्स एंड ऑल दे डू ग्रेजिंग, घास खाते हैं ना. सो ही इज सेइंग दैट कि मैंने वो गोट्स को भी हिल्स के पास लेके जाके उनका जो भी घास चढ़ने का जो है वो मैंने किया है. I want to play atya patya with my friends. Now atya patya means kabaddi of that time. Okay, he is saying that he wants to play kabaddi with his friends. So why I have to make the bed? मैं beds क्यों बनाऊँ? Now Neil's mother, she was asking to make only Neil's bed. Okay, and then to Neil was so much irritated with that work. Now here in 1800 में मम्मी जो है वो सबके बेड बनाने को बोलती है उस बच्चे को, बट ही इज सेइंग दैट कि मैं अभी क्यों इतना बेड बनाऊँ, मैंने इतना सारा काम किया है. ओके, नाउ हियर अगेन द मदर ऑफ दिस 1800 boy, she says that your daily work, your great grandfather did even more. Now go and make bed. Now the mother is saying to that 1800 boy का जो है जनरेशन, उसमें उसकी मम्मी बोलती है कि ये तुम्हारा रोज़ का काम है. ओके, ये जो वो रोज़ का ये डेली चॉपिंग वुड, ग्रेजिंग वाला, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये तुम्हारा रोज़ का काम है. बट योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब तुम्हारे दादा के दादा भी इससे ज़्यादा काम करते थे. तो जाओ अभी अपना बेड बना के अच्छे से सेट करके आओ. सो शी इज सेइंग इन दिस वे. नाउ 1800 बॉय एंड द मदर रिसीव टू वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड्स. नाउ दिस इनका पार्ट खत्म हो गया, ये 1800 वाले जनरेशन मम्मी और बच्चे का पार्ट खत्म हो गया. नाउ दे आर स्टेपिंग बैक टुवर्ड दैट प्रीवियस प्लेस वेयर दे वर स्टैंडिंग. नाउ एंटर्स द न्यू मम्मी एंड बॉय. नाउ दे आर बिलोंगिंग टू द जनरेशन ऑफ 1500, उससे भी पुराना ज़माना. ठीक है, एंटर्स 1500 बॉय ड्रेस इन अ लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप एंड शॉर्ट धोती विथ हिज मदर इन अ 9-yard साड़ी. नाउ अभी और थोड़ा पुराने ज़माने में लोग गए हैं, इट इज़ ऑफ 1500.
Okay, now here the boy is dressed with the sleeveless V-neck top. It is there in your book. Okay, V-neck छोटा सा टॉप है and sleeveless, and उसके नीचे he has worn dhoti, and the mother's costume is still a 9-yard sari. So this is the costume of that 1500 generation. 1500 का जो generation था उसका ये costume था. Now this pair of mother and son enters on the stage. Now Neil is saying that, and this forefather of mine is from. Now Neil is saying that मेरे forefather मतलब कि father के father के father के father के father. ओके, सो दिस इज forefather. ना ये बोलते हैं कि ये मेरे forefather जो भी इतना लंबा जनरेशन है ये कहाँ से आया. सो मॉम इज सेइंग दैट इट इज़ फ्रॉम द 16th century. 16th century जब था उस उधर से योर ancestors are starting. Now we are in the 21st century. Okay, so she is saying that it is belonging to 16th century. Now 1500 boy जो है अभी इनका डायलॉग स्टार्ट होता है. Now they say that my dear mother, I have already milked the cows, then taken them to graze, fetched vegetables from our farm, stacked them, swept the backyard and front yard. Now may I please go to play Ashtapada with Sampad Bhau and Mahadev Bhau? Why should I make my bed now? Now here the boy is now more respectful towards his mother. Now he is saying that मेरी प्यारी माँ, मैंने सब गाय को I have taken out the milk from the cows and I have taken them to grazing. I have already told you that where the cattle, sheep, they all eat the grass, that is called grazing. So he has taken the milk from the cow and then he has taken them for grazing also. Then he has fetched vegetable. I have already told you to bring something. तो ही इज सेइंग दैट कि मैंने वेजिटेबल्स भी लेके आया, उनको साफ भी किया है. फिर मैंने बैकयार्ड, घर के पीछे बैकयार्ड होता है, फ्रंट यार्ड होता है, आंगन. ओके, जिसको आंगन बोलते हैं ना वो, तो वो बोलते हैं कि मैंने वो आंगन भी साफ किया, बैकयार्ड एंड फ्रंट यार्ड का. नाउ मे आई प्लीज, नाउ हियर ही इज रिक्वेस्टिंग, नॉट लाइक अस ऑफ दिस जनरेशन वेयर वी डोंट टेक परमिशन, वी जस्ट अनाउंस आवर डिसीजन दैट कि मैं बाहर जा रहा हूँ. नाउ हियर द बॉय इज like he is taking permission. Now please may I go out to play Ashtapada. Ashtapada is something like chess or something of that time. Okay, so he is saying that now may I go to play Ashtapada, and the friends of that boy is they are also having the names of that generation. उस ज़माने के नाम है इसमें. Now we are having very short simple name. नील है, फिर पता नहीं क्या क्या है, रोहन, राहुल, नाम तो सुना ही होगा. तो सेम वे of this older generation they are having very long and very respectful name like Sampad Bhau and Mahadev Bhau. So he is saying that कि अभी मैं ये संपत भाव और महादेव भाव के साथ में खेलने जा सकता हूँ क्या, तो मैं भी ये बेड क्यों बनाऊँ. सो दिस वे ही इज सेइंग टू हिज मदर. He is not saying he is pleasing, he is pleasing to his mother, he is requesting to his mother. Okay, so here Ashtapada means it's like a chess. So now we have, yes, now the mother of that boy, she is saying that why don't talk back, think of your double great grandfather when he was 14 years age. Now the mother, even though boy is pleasing with a very humble and very respectful manner, तो उस टाइम की मम्मी को ये जो उसका जो मैनर है वो भी उनकी मम्मी को बहुत सारा ऐसा बैक आंसर्स लग रहा था. तो शी इज सेइंग दैट डोंट टॉक बैक, ज़्यादा मत बोलो. थिंक ऑफ योर ग्रेट ग्रैंडफादर, वो बोलती है अभी तुम्हारे एकदम पीछे जो है ग्रैंडफादर, उनके बारे में सोचो. दे वेर डूइंग लॉट ऑफ वर्क व्हेन दे वेर ऑफ 14 years of age. So you should also do your work. So same way she is saying that go and make your bed. Now this 1500 boy and his mother received. Now this 1500 boy and the mother, they step back to the place and then enters the 1000 year का जो था साल, उसके उस ज़माने के मम्मी और बच्चा एंटर होते हैं. Now they are going again into the more पुराना ज़माना. Okay, enters 1000 boy in a flare tunic and churidar waistband and turban with his mother in a sari, upper garment and plenty of jewelry. Now here they are going into the more backward year. बहुत पुराने ज़माने में लोग अभी चले गए हैं. It is of 1000 year and the boy is wearing a flare tunic. Flare tunic is like a frock type of thing. Okay, आजकल मॉडर्न टाइम में लड़कियाँ पहनती है ऐसे
but at that time the boys used to wear this type of flare tunic. This is called flare tunic. It's like a frock or and it's completing till your thighs, okay, thighs or till your knee. And then they were wearing churidar. Churidar you have seen, girls might have been knowing this. चूड़ीदार ऐसी पैंट रहती है टाइट सी और उसके नीचे जो है ऐसे लेयर्स आते हैं. सो दिस इज चूड़ीदार. ओके, सो दे आर वेयरिंग दिस, द बॉय इज वेयरिंग दिस एंड टर्बन. सर के ऊपर ऐसा एक टर्बन है. ओके, एंड दी मदर शी इज वेयरिंग अ साड़ी and the upper garment and the plenty of jewelry on her. Okay, so this is the tunic, flared tunic and churidar and the turban of the boys costume, and the mother's costume is a sari and she is wearing plenty of jewelry. Okay, she is from head to toe she is wearing jewelry upon her garment. Garment means cloth. Now next 1000 जो साल है उसका जो लड़का है वो बोलता है मोस्ट रिवर्ड मदर. Now रिवर्ड मीन्स वेरी डीप रिस्पेक्ट. when you have very deep respect to someone, so you say for example in letters also you write respected sir, madam. So in this way the boy he is saying to the mother that most revered mother, I fetched water from the lake and poured it into the farm channel to water our crops. I cleared the block channels and pulled out weeds. At home I patched the mud walls where there were cracks. Now I have no time for anything else. I wish to go to watch the puppet show. Why do I have to make my bed? Now see, he has done so much of work as compared to Neil and then the grandfather of Neil. So he is saying that mother I have fetched water from the lake. मैंने लेक से पानी लेके आया है, फिर उसको जो है फार्म्स में खेत में डाला है. At that time people were having farming agriculture वगैरह सब था. तो ही सेइंग दैट मैं लेक से पानी लाके मैंने एग्रीकल्चर को फार्म को मैंने उसको वाटर किया है. देन हैव क्लियर्ड ऑल द ब्लॉक चैनल. ब्लॉक चैनल मतलब फार्म्स में एग्रीकल्चर के साइड पे जो पाइप्स जो ब्लॉक होते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लॉक चैनल. सो ही हैज़ क्लियर्ड ऑल दोज ब्लॉक पाइप्स एंड देन पुल्ड आउट वीड्स. वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, अननेसेसरी प्लांट्स कमिंग इन द वे ऑफ दिस पाइप्स, दे आर कॉल्ड वीड्स. ओके, पाइप्स के बीच में का कुछ अनवांटेड अननेसेसरी प्लांट्स आते हैं जो पाइप पे या पानी का रास्ता रोकते हैं, उसको वीड्स बोलते हैं. तो ही हैज़ क्लियर्ड ऑल दोज वीड्स ऑल्सो. देन एट होम आई हैव पैच्ड द मड वॉल्स. पहले जो घर था दे वेर ऑफ मड्स. ओके, सो ही इज सेइंग दैट मैंने मड वॉल्स को भी अच्छे से पैच किया है, अच्छे से उसको पहले आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, एट ओल्ड एज पुराने ज़माने में पीपल यूज टू टेक काउडंग को उसका केक ऐसे बना के दे यूज टू ड्राई इट. ओके, ड्राई लाइक अ चपाती. they used to make round like a chapati and they used to dry it and they used to paste on the wall. Okay, so this type of walls they were having at that home. So he is saying that I have patched those walls also where there were cracks. जहाँ पे cracks थे मैंने वो cracks को भी उस mud से मैंने उसको fill किया है. Now I have no time for anything else. मेरे पास अभी और कुछ टाइम बचा नहीं है. I wish to go out to watch पपेट शो. नाउ एट दैट टाइम कठपुतली का जो शो होता था, पहले कठपुतली के शोज होते थे. तो ही सेइंग दैट आई वांट टू वॉच दैट शो. व्हाई डू आई हैव टू मेक माई बेड? तो अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है पपेट शो स्टार्ट होने के लिए, तो क्या अभी मैं ये बेड क्यों बनाऊँ? ओके, सो ही इज सेइंग इन दिस वे टू हिज मदर. द बॉयज मदर, डू नॉट ग्रम्बल डियर सन, योर triple great grandfather had to do much more when he was your age. Now this boy is answering to his mother in a very respectful, very humble manner. Still his mother, she is saying that do not grumble मतलब doing complain. तो उसकी मम्मी बोलती है कंप्लेन मत करो, तुम्हारे ग्रेट ट्रिपल एंसेस्टर्स वाले जो ग्रैंडफादर थे उनको और भी ज़्यादा तुमसे ज़्यादा काम था जब वो तुम्हारे एज के थे. So she is simply saying that go and make your bed. Now this 10,000 boy and his mother reside. Not 10,000, 1,000. So now this 1,000 boy and his mother reside. They step back. Now इनका सीन जो है अभी खत्म हुआ. Now enters the 1st century CE, that is common era boy dressed in a dhoti and a waistband and no short, and his mother in sari and upper garment and beads jewelry. Now the फर्स्ट सेंचुरी का जो ज़माना था उसके उस ज़माने का बच्चा और उसकी मम्मी आते हैं ना. उस बच्चे का कॉस्ट्यूम क्या है? दे आर वेयरिंग धोती एंड वेस्ट बैंड.
धोती है और उसके ऊपर एक वेस्ट बैंड है। वेस्ट बैंड मतलब लेदर वाला वेस्ट बैंड नहीं, उस टाइम पे लेदर वाले वेस्ट बैंड नहीं थे। वेस्ट बैंड मतलब धोती के ऊपर जो कपड़ा लोग ऐसे कस के बांधते थे उसको बोलेंगे वेस्ट बैंड। एंड नो शर्ट, पहले शर्ट भी नहीं पहनते थे ऊपर आदमी लोग। ओके, सो नो शर्ट एंड हिज मदर इज वेयरिंग साड़ी एंड अपर गारमेंट, नॉट ब्लाउज बट अपर गारमेंट, एक छोटा सा गारमेंट होता है ऊपर के पोर्शन को कवर करने के लिए। सो शी इज वेयरिंग साड़ी एंड अपर गारमेंट एंड बीड्स ज्वेलरी। बीड्स मीन्स स्टोन ज्वेलरी, स्टोन्स रहते हैं उसको बीड्स बोलते हैं। सो शी इज वेयरिंग दैट बीड्स ज्वेलरी। ओके, now the conversation of this first century boy and mother starts. Then the boy says, Mata Devi have fed the poultry, tended sheep, kept the birds away for 4 hours in a field using sling, also plastered the yard with dung. Now this boy, he is saying in more respectful manner that Mata Devi matlab mummy. Okay, that time people used to call Mata Devi to the mummy. Okay, so he is saying that Mata Devi, मैंने पोल्ट्री मीन्स hen, ओके, hen एग वगैरह, तो मैंने पोल्ट्री जो भी hens थे हमारे, मैंने उसको खाना खिलाया। fed that poultry, tended sheep, tended means taking care, I have taken the care of sheep. Now sheep here is in plural form, sheep singular हो या plural हो, we will call it sheep, not ships. Okay, so he is saying that I have taken care of that sheep also. I have kept birds away, मैंने birds को farm से भी बहुत दूर रखा है 4 घंटे तक। Then also plastered the yard with the dung. I have said you that people used to take cow dung, they used to make a roti, round roti like something cake of that cow dung, and then when it is dried they used to plaster those walls with that cow dung. So he is saying that I have plastered, मैंने वो cow dung से walls को भी अच्छे से plaster किया है। Okay, then I used to go out and play bhakchal with my friends. Now bhakchal is also an age-old game of Indian tradition. It's like something like might be a ludo kind of thing. Okay, so I have played bhakchal with my friends. Why do I have to make bed? मैं अभी bed क्यों बनाऊँ? He is saying like this way. Bhakchal is something related to it's like a game. 2 player board रहता है, उसमें 2 players रहते हैं, and it's originated in Nepal. Okay, so this is the age-old game which is played in India also, where 1 player control 4 tigers. एक ऐसा कुछ, this is called Bhakchal game. Okay, I don't know whether you can see or not. So this is Bhakchal type of game. So he is saying that I have to play Bhakchal game. Why do I have to make the bed right now? Now the mother, he is saying to that boy that because that is what boys have to do. Let me tell you about your ancestor 3000 years ago. Now the mother is saying that ये काम जो bed बनाना, bed ठीक करना, ये boys का काम है. Let me tell you about your ancestor. Now ancestors means जो जनरेशन पुरानी जनरेशन जहाँ से स्टार्ट हुई है, दैट इज कॉल्ड एंसेस्टर्स. ओके, सो शी इज सेइंग दैट कि अभी मुझे तुम्हारे पूर्वजनक जो है, जो तुम्हारे एकदम जनरेशन जहाँ से तुम्हारी स्टार्ट हुई है, उधर के जो मेल थे उनके बारे में कुछ बताने दो. तो शी इज सेइंग दैट इन दिस वे. नाउ दे आर गोइंग टू 3000 ईयर्स पीछे जाते हैं लोग. ठीक है. Now first century boy and the mother side. Now this pair of this mother and son, they reside back and enter boy of 3000 BCE. Now BCE is before common era. अभी 3000 year का जो है उसके उस ज़माने के जो आते हैं BCE वाले era के, जो मम्मी और बच्चा आता है. A cloth around the waist held by a cord, long hair in a bun or a pony, and his mother sari, a veil, stone and beads, jewelry. Now the costume of the boy is a cloth around the waist. It's not a proper dhoti, not trouser. It's like a piece of cloth, जैसे लुंगी होती है. He's just doing it round around this waist. Waist मतलब कमर के पास ऐसे राउंड करके उस लुंगी को उसने पहना है. And then the hair is long, then in a bun or a pony style. I hope you have seen the age-old people, they were having a small pony type of thing. Okay, जैसे पंडित लोगों की होती है वैसे उस टाइप में. And his mother is wearing a साड़ी, मम्मी की साड़ी. And veil मतलब a piece of cloth which is covering the face of
women, just like a घूंघट जैसा लगता है, उसको बोलते हैं veil. So the costume of that lady of this 3000 BCE, she is wearing a sari and a veil, and the jewelry of stones and beads, stones और beads की jewelry पहन के रखी है उसने. Okay, now the dialogue starts of that boy. Me bow to thee. Now pay attention. They are into 3000 BCE, जहाँ पे language were not developed properly. Languages ज़्यादा develop नहीं थी, तो they were having a टूटी फूटी language. Okay, so now pay attention how this conversation is going on. Me bow to thee. Now thee here means TH double E वाला दी मतलब you. So the boy is saying me bow to thee, मतलब बाव मतलब झुकना, किसी के रेस्पेक्ट में झुकना, उसको बोलते हैं बाव. सो ही इज सेइंग दैट मी गो टू दी, मी हंटेड डाउन द फूड फॉर अ फैमिली, मैंने फैमिली के लिए हंटिंग भी किया. नाउ दे आर बिलोंगिंग टू 300 जनरेशन जो था पिछला, वहाँ से दे बिलोंग. सो दे आर नॉट हैविंग द प्रोफेशन विच वी आर हैविंग ऑफ ऑफिस वर्क, या फिर वो लोग उस जनरेशन के भी नहीं है जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था. दे आर बिलोंगिंग टू द एंसेस्टर एज, जहाँ पे कुछ occupation named that the people used to hunt animals for eating, so they belong to this generation. So he is saying that I have hunted animals for our food. Then me help father to carve stone bricks for our new house. Now he is saying that मैंने अपने father को भी help किया है stones को carve मतलब cut into pieces to make a new thing. Okay, where like statue कैसे बनता है, एक स्टोन रहता है, उसको कार्व करते हैं, ऐसे ठुक के उसका एक नया पीस बनाते हैं, एक नया स्टैचू बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कार्विंग. सो ही इज सेइंग दैट आई हैव कार्व्ड दैट ब्रिक्स टू मेक समथिंग. ओके, सो उसने बोला कि मैंने ब्रिक्स को कार्व करके घर बनाने में अपने फादर की भी हेल्प की है. मी डस्टेड आर लेदर क्लोथ्स, मोल्डेड mud pots for cooking and put them to dry. So abhi now he is saying that I have dusted leather clothes. Now they were having leather clothes. Why leather clothes? Because in this time people used to hunt animals, they used to kill animals, they used to eat flesh, और जो भी स्किन रहती थी एनिमल्स की obviously it would be leather only. तो वो लेदर के लोग कपड़े पहनते थे. ओके, सो नाउ ही इज सेइंग दैट आई हैव डस्टेड, मैंने अपने लेदर क्लोथ्स को भी साफ किया है. मोल्डेड पॉट्स, मोल्डेड मीन्स गिविंग शेप टू समथिंग. ओके, सो ही इज सेइंग दैट आई हैव मोल्डेड पॉट्स फॉर कुकिंग, मैंने कुकिंग करने के लिए पॉट्स भी बनाया है. एंड देन आई हैव पुट देम इनटू ड्राई, उसको ड्राई करने के लिए भी रखा है मैंने. मी नीड योर काइंड परमिशन टू गो एंड प्ले चॉपर विथ माई फ्रेंड्स. Why? Now he is saying that now I am taking your permission. Now he is so humble, this generation is so humble that he is asking permission to his mother that I have to go out and play chopper. Chopper is also a age-old game where the two players are played in this game. So he is saying that मुझे अभी मेरे फ्रेंड्स के साथ चॉपर खेलने जाना है. I have to take your permission for that. Why dost thou need me to make my bed? Now why dust मतलब this is the form of do. Now we call it as do, but during that time the dialect, जो भी dialect था, not dialogue, dialect, उस टाइम का जो language था, they used to call it as dust. जो हम अभी do बोलते, that time they used to call it as dust. तो वो लोग वो बोल रहे हैं कि why do I have to make bed? दो मतलब यहाँ पे you हो गया. ओके, you. Why do you need me to make me bed? So this is the meaning of this question. So he is saying कि अभी तुमको क्या ज़रूरत है कि मुझे बोलने की कि मैं बेड करूँ. ओके, so he is saying this way to his mother, the boy's mother, because me say so, do it now. So अभी मम्मी क्या बोल रही है कि क्योंकि ये मैंने बोला है तो तुमको करना ही पड़ेगा. ओके, now this mother is not saying कि let me take you back to your grandfather, because यहाँ पे तो जनरेशन उसका स्टार्ट हुआ है. तो she is not saying that कि let me take you to the grandfather of yours. She is saying कि मैंने ये ऑर्डर दिया है तुमको तो तुमको करना ही पड़ेगा. So here the actual generation stops over here. Okay, all the mother to the son in the turn of repeat, do it now, with the boys answering yes. Now all the mothers starting from Neil's mother till the ancestor, जो भी mothers की characters में ladies थी on the stage, from that they repeat, do it now, अभी करो. और जो भी बच्चे थे with the characters starting from Neil till this 3000 BC वाला जो characters थे boys के, they say yes. So this is the closing of this scene.
Now next, Neil. Okay, so young teenage boys have had chores to do outdoors as well as their homes. Now Neil is saying that कि जो भी जनरेशन था उसका नील का, तो उसमें उसको एक लेसन मिला, उसने सीखा कुछ कि जो बॉयज़ थे उसके एज के फ्रॉम his grandfathers, from his grandfather, from his great 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 grandfather till his ancestors, इनके जो भी काम रहते थे, it was outdoor work also and it was indoor work also. Outdoor work मतलब to fetch water, to buy groceries, and indoor work they were having was to plaster the walls and all. So this is the outdoor and indoor work. So he is saying that these boys, these great grandfathers, these ancestors were having outdoor works as well as indoor works, whereas Neil is not having any outdoor work. Neil को कुछ ऐसा पानी भर के लाना नहीं है लेक से, ना उसको कुछ प्लास्टर करना है walls को. He just have to do the indoor work, that is only one work to make his own bed. So he is saying this way. Then mom very much so absolutely right. So now mom says हाँ बिल्कुल, उनको इतना सारा काम था, घर का भी और बाहर का भी. The Neil says, I wish I had a robot to make my bed and tidy up my room. Now Neil is saying, Neil is living in this modern era, modern generation. Now he is having idea कि I wish I was having robot. काश मेरे पास robot होता जो मेरे सारे काम कर सकता था. तो Neil is saying this way. So now mother is saying nothing is impossible. If you try, you can make such robot. But even from that you need to work hard. The bottom line is go and make your bed. Now Neil's mother is saying that nothing is impossible. You can even make your robot and give him command to do your work, to do everything which is required to keep the room clean and tidy. So she is saying to that Neil कि तुम अभी भी रोबोट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तुमको काम करना पड़ेगा. रोबोट ऐसे ही शक्ल लगा बुम वाली ड्राइंग करके रोबोट बाहर नहीं आएगा. उसके लिए यू हैव टू स्टडी, you have to do work, you have to assemble all those things, tools, machines to make a robot. So she is saying in this way that you have to work hard to make a robot. So here the bottom line is go and make your bed. Lastly the line of the mother is जाओ पहले अपना वो बेड ठीक करके आओ, उसमें कुछ मेहनत नहीं लगती है. पहले वो बेड ठीक करो, उसके बाद जो भी आगे का काम रहेगा, टफ टास्क रहेगा, उसको तुम इजीली कर सकते हो. So now here the curtain close and the skits end. So this is the lesson or skit which is having a beautiful moral that you have to do your work. Now as you have seen from each scene till each year which we have went from 1950s till 1910, फिर उसके बाद फिर हम गए 1800 में भी गए, then we have gone into 1500, then we have gone into 1000, then we have gone into 100 CE, then we have gone into 3000 BCE. So here you might have observed that the way of the moral or the children were having at that time, they were always being humble towards their mother. जैसे जैसे हम पुराने जनरेशन में गए वैसे वैसे जो डायलॉग्स थे, it were more humbling towards the mother. The children were talking very respectfully, they were doing all the household works and they were asking the permission to grant to go out and play. But as we come to this modern generation, here we have seen that Neil is giving back answers to his mother. Okay, so here is the great difference you can say between the generation. पहले के generation में बहुत respect था मम्मी के लिए, parents के लिए. See how you can see a most revered mother, ऐसे करके उसने अपनी मम्मी को बुलाया मेरी प्यारी माँ, ऐसे करके. फिर they are asking permission to go out. They are not talking back. Okay, they are not giving back answers to their mother. They are talking very softly, very humbly towards their mother. Okay, and then mother they are like commanding. बहुत ज़्यादा commanding है वहाँ की मम्मियाँ जो पुराने ज़माने की है. Now we are having very opposite. The generation kids of this generation they are giving back answer and the mummies are like very afraid of those kids. Okay, अभी मम्मी जो है एकदम खामोशी से सब सुनते रहते हैं और बच्चे जो है पूरी उल्टी बात सुना देते हैं मम्मी को. Okay, so this is the generation gap which we are having in this era. Okay, then I hope you have understood. First is the respect which they are having till the ancestor towards the mother. Second thing, the work. जैसे जैसे हम पुराने ज़माने में गए वैसे वैसे जो काम था वो भी बढ़ता गया इन वॉइस का. ठीक है. थर्ड इज डायलॉग्स. ओके, डायलेक्ट. पहले जो था थोड़ा थोड़ा जो हम पुराने ज़माने में जा रहे थे तो डायलॉग्स द लैंग्वेज वे सिंपल विच वी कैन अंडरस्टैंड. व्हेन दे वेंट इनटू एंसेस्टर तो जो डायलॉग्स था इट वाज
like of ancestors where the languages were not developed properly. So here we are having dialogue and language difference. Okay, I hope you understood this. Okay, so here is the model is that you have to do your own work. Now making bed, setting up your bed properly does not take any hard work, does not take any qualification, does not take any training. This is something which is like a model thing you can do it very easy. Okay, so here there is something that the first thing when you get up in the morning, the first task which you have to do is to make your bed, is to put your bed properly, nicely, fold your bed sheet, arrange it properly and keep it in a proper place. This is the first task of each and every one of us which we have to do at home. अगर ये टास्क छोटा सा टास्क है, 1-2 मिनट का टास्क है जो हमको हमारा बेड ठीक करना है, अगर हम ये टास्क भी अपना नहीं कर सकते तो पूरे दिन के जो भी हमारे डिफ़िकल्ट टास्क है उसको पूरा कैसे करेंगे. सो हियर इज द मॉडल वैल्यू इज दैट कि हमारा जो बेड है जिसको हम सेट करके इट्स वेरी सिंपल. व्हेन यू डू दैट थिंग, व्हेन यू मेक योर बेड, व्हेन यू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइजली, एवरीथिंग ऑन योर बेड, तो जो नेक्स्ट काम रहेगा पूरे दिन में, जो भी नेक्स्ट काम रहेगा, यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल बी फीलिंग पॉजिटिव टू डू दैट वर्क बिकॉज यू हैव मेड योर बेड तुमने अपने ठीक किया है. तो तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं और भी काम कर सकता हूँ पूरे दिन में, मैं और भी अच्छे अच्छे टास्क कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ अपने टास्क पूरे दिन में. जब तुम अपना बेड ठीक नहीं कर सकते तो तुम आगे के काम क्या करोगे पूरे दिन में. सो दिस इज द मॉडल गिवन इन दिस लेसन दैट द बेड, मेकिंग बेड ऑफ समवन इज वेरी सिंपल थिंग. ओके, so when you put everything organized, this describes you. अगर तुम अपनी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो तो ये तुमको डिस्क्राइब करता है, तुम्हारे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है. कोई तुम्हारे घर पे आएगा और देखेगा कि बेड कितना मेसअप है तो वो तुमको ये बोलेगा कि कितना गंदा रूम है इसका. व्हेन यू कीप एवरीथिंग टाइडी इन योर रूम, पीपल विल कम एंड से कि इसका रूम कितना साफ है. सो पीपल विल ऑल्सो बी गेट इम्प्रेस विथ योर वर्क. सो यू डू अ वर्क, स्टार्ट मेकिंग विथ योर बेड अर्ली इन द मॉर्निंग. व्हेन यू वेक अप, पहला काम जो है बेड को ठीक करना है, अपनी बेडशीट को ठीक करना है. फिर उसके बाद देखना है कि तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिविटी आती है दूसरे काम करने की, इट विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. सो यू विल बी मोटिवेटेड, वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स योर अदर वर्क. तो तुमको ऐसा लगेगा कि मैंने बेड ठीक कर दिया तो अब तो मैं पूरे दिन में कुछ भी काम पूरा करके ही रहूँगा. तो दिस इज द वैल्यू गिवन इन दिस लेसन दैट यू हैव टू मेक योर बेड and then whatever will come in your way throughout the day you can do it very easily. Okay, so here the lesson ends and I hope you understood the value of this lesson because lesson को पढ़ के value समझ में नहीं आएगी. ठीक है, तो you have to keep in mind that when you make your bed you will be motivated to do the further work of the whole day. Okay, so you will feel positive that you have made your own bed. अपने खुद के बेड को तुमने खुद ठीक किया है. Okay, and then when you come to home, खेल के या पढ़ के या क्लासेस से जब घर पे आओगे और जब अपना अच्छा साफ़ सुथरा बेड देखोगे तो यू विल फील हैप्पी कि अरे मेरा बेड तो पहले से ही साफ़ सुथरा है, तो मुझे खाली जाके सोना है. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तुम थक के आ रहे हो और तुम देख रहे हो अपना बेड इतना मेस्ड अप है, फिर तुम सोचोगे अरे अभी बेड को भी ठीक करना है फिर उसके बाद सोना है. ऑलरेडी बेड सुबह ठीक करके जाओ और फिर जब जाके आओगे तो यू विल सी योर बेड इज़ वेरी टाइडी लाइक द वे यू हैव डन. सो यू विल फील मोर हैप्पी एंड यू विल रेस्ट very soundly. So this is the model given in the lesson. I hope you understood the lesson. Take care, make your bed. This is a very simple task you can do and you can help your mother, you can impress your mother, you can make her happy by doing your bed. She will become more happy कि मेरा बच्चा खुद से बिस्तर लगाता है, खुद से बिस्तर अच्छे से रखता है. So she will become happy and you will also feel positive to do more other work of the whole day. Okay, I hope you understood. Take care and bye.